A very good morning to my dear students of class 6. This is your maths class and we are going to start exercise 3.4 today. Let's start the exercise. We have the first question and in the very first question we have find the common factors of. हमें common factors find out करने हैं and numbers आपको given है. We have D part, 4 parts here, A, B, C, D. And two parts I will solve for you and rest two parts will be your homework. Let's start from the A part, that is 20 and 28. Okay, तो first question आपका है, number given है 20 and 28. इसको हम solve करेंगे. पहले question क्या है, find the common factors of. What do you mean by common? Common मतलब जो दोनों में same हो. ठीक है, तो 20 एंड 28 के आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसा आपने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे. सिमिलरली वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20, देन वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 28, देन वी विल चेक दैट व्हाट फैक्टर्स आर कॉमन बिटवीन दीज टू नंबर्स. इन दोनों नंबर के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उन दोनों कॉमन फैक्टर्स को हम लिखेंगे. Okay, now we will start from A part, that is 20 and 28. So first we will write the factors of 20. Okay, so as you know 20 जो है वो किस किस की टेबल में आता है, 1 20s are 20, 2 10s are 20 and 4 5s are 20. ठीक है, similarly 28 1s are, as you know 1 is a factor for every number, 2 14s are, then 4 7s are. ठीक है, इनको रिवर्स करेंगे तो 7 4 जा, 14 2 जा एंड 28 1 जा. सिमिलरली यहाँ पे भी 5 4 जा, 10 2 जा. सो फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20. ओके, एंड फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 2 4 7 14 एंड 28. ओके, सो वी गेट द फैक्टर्स हियर. So now the common factors are, जो हमारे common factors हैं, 1 is common, 2 is also common and 4 is also common. So we have 3 common factors here. तो आपके पास यहाँ पे 3 common factors आ गए and these are 1 2 and 4. So एक और बार मैं आपको explain करना चाहूँगी. 20 के आप फैक्टर सबसे पहले लिखेंगे. इट मीन्स 20 जिसकी टेबल में आता है वो सारे नंबर्स आपको लिखने हैं. 1 इज द फैक्टर फॉर एवरी नंबर, सो 1 20 are 20. देन यू नो 20 comes in 2 टेबल, 2 10s are 20, देन 4 5s are 20, 5 4 इसी का रिवर्स कर लेंगे, 5 4s are 20, 10 2s are 20 and 20 1s are 20. Now 28 के लिए we will write the factor 1 28 are 28, 2 14s are 28, 4 7s are 28. 4 7s are, then reverse इसका आ गया, 7 4s are 28, 14 2s are 28 and 28 1s are 28. So we get all the factors of the given number. The factors of 20 are 1 2 4 5 10 and 20. And factors of 28 are 1 2 4 7 14 and 28. Now the common factors are, जो दोनों में common है, it means same है, तो these are 1 2 and 4. So we get the answer that 1 2 and 4 are the common factors of 20 and 28. Now I will solve D part for you and the B and C part is your homework. So we have D part here, 56 and 120. First we will write the factor for 56. 56 comes in the table of, here I am writing directly, 1 2 4 से भी divisible हो जाएगा, then 7 8 जा 56, रिवर्स मिल के आपको 8 7 जा 56, 14 4 जा 56 and 28 2 जा 56 and 56 1 जा 56. So 1 2 4 7 8 14 28 and 56 are factors of 56. Now factors of 120 are, 120 किस किस से divisible है, 1 2 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 and 120. So these are the factors of 120. Now we have to write common factors. So common factors of 56 and 120 are 1 2 4 and 8. Okay, so first हमने 56 के सारे फैक्टर लिखे, यानी 56 जिसकी टेबल में आता है, और यू कैन से 56 जिन से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है. सो 1 2 4 7 7 8 56, 8 7 then 14 4s are 28 2s are. So these are the factors of 56. Now factors of 120 is divisible from
जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 15 8 जा क्योंकि 120 होता है एंड 10 से भी डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 0 है एंड में. देन 12 12 10 जा 15 15 8 जा 26 जा 24 5 जा 34 जा 45 जा 62 जा एंड 121 जा 120. ठीक है. सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 120. सो द कॉमन फैक्टर्स यू कैन इजीली चेक दैट कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए 1 2 4 एंड 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. सिमिलर क्वेश्चन है आपका, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. पहले आपको सिर्फ 2 नंबर्स के निकालने थे. दिस टाइम वी विल फाइंड आउट द 3 नंबर्स फैक्टर. ठीक है. 3 नंबर की बने, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स की बने. सो फर्स्ट पार्ट इज 4 8 एंड 12 एंड सेकंड पार्ट इज 5 15 एंड 25. आई विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट फॉर यू 4 8 एंड 12 एंड द सेकंड पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ. आप इसे खुद करेंगे. ओके. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली आपको करना है, फर्स्ट हम 4 के फैक्टर लिखेंगे, देन हम 8 के फैक्टर्स लिखेंगे, देन 12 के फैक्टर्स लिखेंगे एंड देन वी कम टू नो कि कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं. सो फर्स्ट वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 4. ओके. सो 4 8 एंड 12 के लिए फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 इज द फैक्टर फॉर एवरी नंबर, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4. नाउ फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, then 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 and 8 1 जा 8, 1 2 4 and 8. Now factors of 12 1, then 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा and 6 2 जा and 12 1 जा. So these are the factor of 12. Now the common factors, इन सब के बीच में common factor जो है 1 2 and 4. So these are the common factors here. You can see that common factors of 4 8 and 12 are 1 2 and 4. Okay. Now we have the next question and that is find first 3 common multiples of. आपको अब कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. फर्स्ट हम क्या कर रहे थे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे. अब हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. जी नो मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपको पहले भी बताया था. मल्टीपल्स सिंपली आपको टेबल लिख देना है. सो आप किसी भी नंबर को अगर दूसरे अदर नंबर से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिलता है दिस इज कॉल्ड मल्टीपल. ओके. सो व्हाट वी डू, वी राइट द टेबल हियर. सो वी हैव द क्वेश्चन find first 3 common multiples of. The first part is 6 and 8 and the second part is 12 and 18. Okay. So आप यहाँ पे common multiples लिखेंगे given numbers के. तो first part is 6 and 18. multiples of 6 आप लिखेंगे 6 12 18. 6 की टेबल आप लिखेंगे 30 then 36 and multiples of 8 are 8 16 24 32 42. ठीक है. तो 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 6 और 8 के बीच में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया है यू कैन इजीली चेक द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 24 है. ठीक है. तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया 24 उसका अगर आप टेबल लिख देंगे तो वो दोनों में कॉमन होगा. सो 3 कॉमन मल्टीपल्स अगर आप आगे भी इस टेबल को कंप्लीट करेंगे यू विल गेट 48 6 8 जा 48 8 6 जा 48 देन 48 के बाद 72 12 6 जा 72 एंड 8 9 जा 72. यू कैन राइट द टेबल. आप आगे टेबल लिख के भी चेक कर सकते हैं. यू कैन राइट डायरेक्टली 24 का भी अगर आप टेबल लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो द मैथड. आप ऐसे भी इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर को प्राइम नंबर है. सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए. सो क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है. ठीक है. यू विल चेक. कैसे चेक करेंगे, हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे. अगर उनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 आया, इफ द कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. ओके. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ए पार्ट. ए पार्ट से हम चेक करेंगे 18 एंड 35. फर्स्ट आई विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 18 हियर. 18 1 2 3 के टेबल में आता है 6 9 एंड 18. Now factors of 35 it comes in one table. Then 5 7s are 35, 7 5s are 35 and 35 1s are 35. Now clearly you can see that common factors are only 1. दोनों numbers के बीच में जो common factor आया that is 1. So therefore 18 and 35 are said to be co-prime number. तो क्योंकि इन दोनों के बीच जो common factor है that is only 1. So ये given number आपके क्या होंगे, 1 and 35 has 1 as common factor. So 18 and 35 are prime numbers. ठीक है. These are prime numbers, co-prime. Okay. So co-prime numbers are those number which have 1 as common factor. जिनका common factor क्या होगा 1. Now we will
check for 15 and 37. First we will write factors of 15. Factors of 15, 1, 3, 5 and 15. Okay, now we will write the factors of 37. 37 is a prime number, किसी की टेबल में नहीं आता. So 1 and 37, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 1 and the number itself. Now the common factors is clearly you can see 1 is the common factor. So 15 and 37 का जो common factor आया that is 1. So इसके सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है. सो 15 and 37 are also co-prime number. Now we have D part here. The numbers are 17 and 68. So factors of 17 are 17 is a prime number, only two factors, 1 and the number itself, it means 17. And now factors of 68. 68 के फैक्टर है 1, इवन नंबर है 2 भी इसका फैक्टर होगा. Now 4 से डिविजिबल होता है, then 17. Okay, and 34 2s and 68 1s. So 1, 2, 4, 17, 34 and 68 are factors of 68. Now common factors 1 भी मिल गया, 17 मिल गया. We have two common factors here. So 17 and 68 has 1 and 17. Two common factors. अब आपके पास यहाँ पे two common factors हैं. So therefore क्या होगा? These numbers 17 and 68 are not co-prime number. Okay? 17 और 68 आपका co-prime number नहीं है. Okay? Co-prime number सिर्फ वो होंगे जिनका फैक्टर 1 आएगा. So here we have completed our exercise 3.4 in question number 5. I did A, B and D part, and the rest part, C part, E part and F part is your homework. You will put the cross on question number 4, 6 and 7. That is not in your syllabus, and also we are not going to do exercise 3.5. That is also not in your syllabus. As you know, CBSE has deduct 30% of your syllabus for this COVID-19 pandemic situation. Now we will start exercise 3.6, and in exercise 3.6 we are going to learn HCF, highest common factor. Okay, so what is highest common factor? Generally we call the highest common factor HCF. Okay, HCF means highest common factor. H for highest, C for common, F for factor. We will learn about this topic with example, and we have the example. We have the two numbers here, 8 and 12, and we will find the highest common factor of given numbers 8 and 12. Okay, now first, to find highest common factor, we will find the factors of these numbers. Okay, so first we have 8 here. So what are the factors of 8? As you know, जिन table में 8 आता है, you will write those table. 1 is the factor of every number, so 1 8 is 8, and you know 2 4 is 8. और again अगर आप इसका रिवर्स कर दीजिए, 4 2 is 8 and 8 1 is 8. So we get all the factors here, and we know the factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. Okay, so factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. Now we will find out the factors of given number 12. Okay, now as you know, 12 के जो factor हैं, 1 is the factor of every number, then 2 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, and then 6 2 are 12. Okay, so 1 12 are 2 6 are 3 4 are, then reverse कर लीजिए, 4 3 are 6 2 and 12 1 are. So we have numbers here 1 2 3 4 6 and 12. These are the factors of 12. Now हमने find out कर लिए हैं दोनों numbers के factor. Now we will talk about the common, जो दोनों में common है. Common means एक जैसे हैं. So we have common factor, and these are 1 2 and 4. So 1 2 and 4 इन दोनों के common factor हो गए. So the common factors are 1 2 and 4. Now we have to take out the highest common factor. And what is the highest number? 4 is the highest number. So you can see that 4 is the highest number. So you can say that HCF of 8 and 12, it means highest common factor of
18 here, 2 ones are 2, 2 8s are 16. Now 2 9s are 18. Now 9 is multiple of 3 and 3 is a prime number. 2 से ये divisible नहीं होगा because 9 is an odd number. So 3 3s are 9 and last में आपको दो 3 मिल जाएंगे and 3 are prime numbers. Okay, so we get the prime factors of 36 and that are 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. Okay, so we have the prime factors of 2 into 2 into 3 into 3. Now we have to take out the highest common factor of 24 and 36. तो HCF will be दोनों में क्या common है देखो 2 2 2 2 and 1 3 and 1 3. Okay, so we will take out only the common factors. So 2 again, one more 2 is common there, 2 into 2 and 1 3 is common there. So 2 into 2 into 3, ये तीनों common आपके numbers आ गए. So HCF is equal to 2 into 2 into 3 and that is equal to 2 2s are 4, 4 3s are 12. So HCF of these two numbers 24 and 36 is equal to 12. Okay, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and that is equal to 2 4s are 2 2s are 4 and 4 3s are 12. Now you have understood about the HCF. Now we will start exercise 3.6. Okay, so in exercise 3.6 we are going to do only first question. Find the HCF of the following numbers and A to J parts आपको given है. Okay, I will solve 3 parts for you. The rest part you will do by yourself. So the more practice will make you perfect. जितना practice करेंगे आपको sums और अच्छे से समझ में आएंगे. So only 3 question I will do for you and rest question you will do by yourself. Okay. Right class, now we will start the question here. Question is find the HCF of the following numbers and we have given A to J part here. Let's start from the first part, that is A part. In first part we have to take out the HCF of given number 18 and 48. Okay, so first we take out the prime factorization of number 18. As you know 18 is divisible by 2. So 2 9s are 18, then 9 is divisible by 3, 3 3s are 18 and 3 1s are 3. ठीक है, why we call it prime factorization? Because you use only prime numbers here. ठीक है, इसे prime numbers से आपको divide करना है. Now we will take out the prime factorization for 48. Okay, so 48 के लिए we have the prime factorization 2. 48 is divisible by 2. So it is 2 2s are 4 and 2 4s are 8, 24. Then 24 is also divisible by 2, 2 12s are 24, then 2 6 are 12, 2 3s are 12 and 3 1s are 12. So we get the prime factorization for 18 and 48. 18 is equal to 2 into 3 into 3 and 48 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So HCF of these two numbers 14 and 48, the common numbers are 2 and 3. The product of these two numbers will be the HCF. So 2 into 3 is equal to 6. So HCF of 18 and 48 is 6. Okay, what we do, दोनों नंबर के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और चेक करते हैं दोनों में कौन से, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कौन से नंबर कॉमन है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट ही आपका HCF होता है. Now we will solve the next part and that is now we will solve the next part, that is E part. So E part we have 36 and 84. So first we take out the prime factors of 36. 36 is divisible by 2, 2 18s are 36, then 2 9s are 18, 9 is divisible by 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो 36 के फैक्टर हमें मिले 2 into 2 into 3 into 3. Now 84, 2 4s are 8 and 2 2s are 4. Then 42 is also divisible by 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Now 21 comes in 3 table, 3 7s are 21 and 7 comes in 7 table, 7 1s are 7. So we get the prime factorization for 84, 2 into 2 into 3 into 7. Now the HCF is common number. So we have the common numbers 2 into 2 into 3 and that is equal to 2 2 2 2s are 4, 4 3s are
factorization of 70, 105 and 175. First we will do the prime factorization for 70. Now for 70, 70 is divisible by 2, 2 3s are 6 and 2 5s are 10. We get 35 here. Then 35 comes in 5 table. 5 7s are 35 and 7 1s are 7. So prime factorization for 72 into 5 into 7. Now 105. 105 is divisible by 3. 3 3s are 9, 3 5s are 15. 35. Now 35 comes in 5's table. 5 7s are 35, then 7 1s are 7. Now we get prime factorization for 105, 3 into 5 into 7. Now 175. 175, last digit is 5. It must be divisible by 5. So 5 3s are 15 and 5 5s are 25. We get 35. 5 7s are 35 and 7 1s are 7. So 175 के लिए we get 5 into 5 into 7. Clearly you can easily check that 5 into 7 is common in these three among three number. ठीक है, इन तीनों नंबर में जो कॉमन है वो क्या नंबर है? 5 into 7. So HCF is equal to 5 into 7. Therefore the HCF of 70, 105 and 175 is 35. We have done three parts. So in exercise 3.6 you have to do only question 1. Three parts are done by me, A and then E and G part. So your homework are B, C, D, F, H, I and J part. These sums you will do by yourself. Okay. So class 6, this is all for today. So we did 3.4 and 3.6 exercise and 3.5 is not in your course. And the question which are given in homework, please आप इन्हें करेंगे. Do the questions. Okay, thank you so much class 6.